तो वेलकम बैक गाइस। आज हम प्ले करने वाले हैं हिटमैन 3 का पार्ट 5। और भाई जो लास्ट में ट्विस्ट होने वाला है ना स्टोरी में, क्या ही कहने उसके। तो बाकी के पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। I found something. Buenos Aires International Airport this morning. Now watch this. Heralds. Trail ends at the airport. But turns out that a top Providence operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates & Cohn. And get this, is hosting his retirement party today. She's infiltrated them. She's sending a message. She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constant's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Anyway, I need to go. See you around, 47. No, you won't. नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है। Because you're not an idiot. Let's just humor him. Yates likes his little games. ओके, हमें यहाँ डायना से मिलना है, कुछ बात करनी है। और You got my message. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next Constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects... I will convince him you acted alone. Retaliation for Grey. Trust me, I know what I'm doing. The Herald, Tamara Vidal. She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my side for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Here, I got you an invitation, just like old times. तो इनविटेशन कार्ड हमको मिल गया। when it's done. Good luck, 47. इसी को दिखाकर हम अंदर जाएंगे पार्टी के। दो टारगेट है हमारे पास यहाँ पर, और तीसरा भी है कि डायना को एलिमिनेट नहीं करना है। ऑप्शन तो आएगा लेकिन उसको मारना नहीं है। Ready, Pam? 3, 2, 1, and... For more than 2 decades. Mr. Yates? It's Aaron, sir, from the firm. Sorry, I came as quickly as I could. Please leave the Yes, sir, area. I have the files. Sorry it took इनका so कार्ड भी long. उठा लेते हैं लगे यार। Access our remote server to तुम भैया आराम से print फूको बैठ के। my VPN to- Why weren't you at the club last weekend? You know दो this is टारगेट्स हैं हमारे पास। Bienvenidos to Viñeda Yates, señor. ओके लो भाई। See your invitation, please. यार वायलेंस तो बड़ा गजब को बज रहा है यहाँ पर। Enjoy the party. ठीक है। evening, senor. Would you care for an aperitif? Thank you. So, you must know everything that goes on at the event. Care to give me the lowdown?
इतनी बड़ी पार्टी में बस 2-3 लोग ही नाच रहे हो, कोई नाच नहीं रहा। डांस कोई कर ही नहीं रहा, I'm here for the tourists. सन्नाटा है। तो ये रहा पहला हमारा टारगेट, और इसको डायरेक्ट तो मार नहीं सकते, कुछ जरिया ढूंढना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए। That's right. Yates has arranged for the chief winemaker to take Burnwood and Tamara Vidal on a grand tour of the estate. Wants you to tag along. Not for my sparkling personality. This Burnwood woman sure has his panties in a twist. Wonder what the deal is. Yates' business is his business. Just get yourself ready and sign into the visitor center. Oh, have a drink on my behalf. I don't drink. It makes me sentimental. कैमरा, पिस्टल, कॉइन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पिस्टल तो वैसे भी बहुत कम यूज़ करते हैं। ओहो, अरे नहीं, अच्छा ये इनके सामने नहीं जा सकते, कोई नहीं, पीछे पीछे रहेंगे। In fact, a couple of spots come to mind. On the tour or after. Stand by. So you're not sure? Does that mean there's a plan A? One where I don't stand a 50-50 chance of getting caught? I mean, you do realise the risk here, boss. Broad daylight, workers around. इसको एलिमिनेट करके इसी के कपड़े पहन लेते हैं। But if I'm going to be one of these heralds, you need to start letting me in. प्रॉब्लम ये है कि इनके सामने हम नहीं मार सकते, So who's this for? इनको दिख जाएगा। शायद ये यहाँ पे आए, हाँ आई थिंक आएगा, आने दो। तो घास फूस के आगे भी दिख जा रहा है क्या? चल भाई आगे आ जाओ, हो सकता है कॉल पूरी होने के बाद है, आई थिंक। Mr. Yates. Yeah, okay. You mind telling me why? Okay. यहाँ के नहीं इसको ले जा सकते क्या? In fact, a couple of spots come to mind. On the tour or after. Stand by. So you're not sure yet? Does that mean there's a plan A? वेट करना पड़ेगा Don't stand a 50-50 chance of getting caught. I mean, इसके आने you का। do realise the risk here, boss. Broad daylight, workers around. Who exactly is this Burnwood woman, and how's she pissing on your parade? So, How do you feel about Burnwood? yeah, all right. But if I'm going to be one of these heralds of yours, you need to start यार कितनी देर तक बात करेगा? Okay. So who's this for? चलो हो गई शायद बात इसकी, अब वेट करते हैं इसका यहाँ आने का। No problem. I just never framed an urban legend before. Very close true. I like it. जैसे ही आता तब हम इसको एलिमिनेट करते हैं। ओके तो ये पास जा रहा है, मतलब इधर आ रहा है, तो शायद नल चालू करने से ये इधर वाले मेंबर चले जाएं। अरे यहाँ के सेफ को क्या हो गया यार? इसको पोस्ट पे तो कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन नहीं है, नीचे एक मेंबर कोई खड़ा हुआ है, वो सब करने लगेगा, इसलिए इसको पोस्ट नहीं करते हैं, इसको यहीं कहीं एलिमिनेट करते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं। ओके तो इससे छुप कर, ओहो आओ तुम अंदर, चलो। तो अब इसके जल्दी से कपड़े ले लेते हैं। अगर नीचे से रास्ता हो तो नीचे से चलें। आओ चले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, आई थिंक थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ेगा। ये डोर लॉक है तो यहाँ से चल के देखते हैं एक बार।
यहाँ पे आई थिंक डायना और वो भी हैं। हमें किसी सेफ से बात करनी पड़ेगी जो शायद जो आगे का कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों कुछ बातें कर रहे हैं स्टोरी के हिसाब से। You'd think there was some kind of fail-safe mechanism or early warning system in place. Yeah, you would, but you'd be wrong. If the pumps malfunction, the tanks overflow. That pretty much sums it up. So, pay attention to that pump. I've been meaning to ask if you can connect me. ओके, पहले इस सब से बात करते हैं। Corvo Black. I'm on the tour. Right, Mr. Black. Welcome. Miss Burnwood and Miss Vidal will meet you down by the wine fields. I trust you know the way. I can find my way around. Enjoy. ओके, ये आर्टिफिशियल ट्रीज कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये रही डायना और जो हमारा टारगेट है। Hey, how you doing? अरे इनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते क्या? Remind you of anyone? That's different. We're not putting our lives on the line. Tell that to Yamazaki and Cassidy. Hajun was shot point blank in a parking lot. Bronson was never heard from again. Fine. I take your word. ज्यादातर लोग काले ही कोट पहने हुए हैं, कुछ लोग ही केवल वाइट कोट पहने थे। कोई नहीं, यहाँ पे वेट करते हैं। डायना से कुछ बात करनी होगी। Over here. You two must be Burnwood and Vidal. And you must be Yates's garbage man. Sorry, but I didn't catch your name. This is Corvo Black, Tamara. He's a ICA regular. I only work with the best. Well, we're all here, it seems. Except for our guide, the chief winemaker. Looks like we're stuck here until someone fetches him. Mr. Black, I'm looking in your direction. Hold on. I'll track him down. Attaboy. Do try and bring him back in one piece. Counterintuitive as that may be. That was a bit rude. Yes, yes it was. Gray's militia went rogue after the joined up with Burnwood. ओके, अंदर चलते हैं। Idle hands. सीटी कौन बजा रहा भाई? तो यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल। मुझे यहाँ के कपड़े लेने पड़ेंगे। किसी एक फार्मर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इन दोनों को तो मार भी नहीं सकते, आमने सामने कहीं एक दूसरे को देख लेंगे। What? What is it now? पहले इनकी बातें सुनते हैं, क्या बात करें आपस में। Senor Yates wanted you to give them the grand tour. Remember? If I don't have more important things to do than babysit Yates' socialite friends. It's only harvest season. Better do what he says, Patron. Big shot New York lawyer like that. Don't want to get on his bad side. Well, I'm not going anywhere until I have decided if the crop is right for picking. Bring me the 3 Malbec grapes to taste, Ramon. If Yates doesn't like how I prioritize, he can weigh me down with concrete. तो हमको इस बंदे को 3 ग्रेप्स ला के देने पड़ेंगे जो पूरी तरह से पके हुए हों। उससे पहले हमें किसी फार्मर के यहाँ पे कपड़े लेने पड़ेंगे। लेकिन पहले इसको दूर जाने दें, नहीं फिर ये बात के लिए दिक्कत हो सकता है। चलो ठीक है, गया कि चलते हैं। अरे रे 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 रे, स्टॉप 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 स्टॉप, सामने से नहीं जा सकते, इसको उधर जाने का वेट करना पड़ेगा।
I'm just tired. ये कौन सीटी बजा रहा होती देर से? I'd be surprised if they even noticed we were here. It's actually comforting. थोड़ी जल्दी बातें खत्म करो भाई। इधर से रास्ता ढूंढते हैं, ये लोग तो वहीं खड़े ही रहेंगे। आई होप इधर कहीं से रास्ता। अरे रे, ये तो देख रहा है बार बार, तो पीछे कहीं से यस है रास्ता। तो किसी एक फार्मर को ये रहा। ओके, तो इसको पहले दिखेगा तो नहीं किसी को ना। चलो ठीक है, इसको एलिमिनेट करते हैं। ओके, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। इसको साइड ले चलते हैं। ओके, जल्दी से इसके कपड़े लेते हैं और ग्रेप्स काटने चलते हैं। हमको 3 ग्रेप्स काटने हैं। उसको ग्रेप्स काटने के लिए भी एक कोई टूल होगा यहाँ पर, शेयर्स नहीं, आई थिंक ये रहा। ठीक है, जल्दी से फिर हम ग्रेप्स काट लेते हैं। मैं पार्ट को स्किप कर देता हूँ, जो जो ग्रेप्स ढूंढ के काटना हो, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा फिर काटना पड़ेगा। ओके, पहला ग्रेप्स ये रहा, दूसरा और तीसरा भी मिल चुका है हमारे पास। Mr. Vargas, I have the 3 grapes you requested. Yes, good. Now, ओके, ये लो। let's see. A lovely inky black color. ये क्या हो गया? Imagínate una barrera invisible entre tú y yo que se extiende de tus manos, de tus brazos. तो इनके ज़्यादा नज़दीक नहीं खड़े हो सकते हैं, Hacemos eso y estemos fuera de esa क्योंकि फिर zona. इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आ जाता है बार बार। ¿Entiendes? Now, let's see. फिर निकाला जेब से। भाई जब खाने ही तो निकाला क्यों? Good size, large and firm. Seeds brown. टेस्टी। Finally, taste. Sweet, flavorful, robust tannins. Some floral notes. Marvelous. Why, I say these grapes are ripe for harvest. Okay. Inform the workers, will you, Ramon? I have a third to contact. Will do. चलो भाई तुम चलो, मैं अपने वापस से पुराने वाले कपड़े पहन कर आता हूँ। उधर ही पहुँचते हैं, क्योंकि फार्मर की ड्रेस में तो हम नहीं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। ओके, पहना हमने अपने कपड़े और दीवार फांद कर। मैं काम करता हूँ, अपनी गन को भी हटा देता हूँ, क्योंकि यूज़ तो करनी नहीं है फ़िलहाल के लिए। इसको इसमें डस्टबिन में ये रहा। अरे कौन देख रहा था? ओके, चलते हैं। Ah, my fellow wine lovers. Hello. Hey, yo, what's up? Welcome to Viñeda Yates. I do apologize for the delay, but the Malbec grape is a demanding mistress. So, I am Gabriel Vargas, Chief Winemaker, and I will be your tour guide. Any questions before we start? Yes, but you're not going to like them. We're good. Lead the way, Senor Vargas. Wonderful. Follow me. These are busy times. In fact, we're just about तो इसको follow करना है हमको। crop. Great expectations. ओके, So, how do you like Argentina? Like everywhere else, full of Americans. First stop on the tour is the production floor, where our prize-winning Malbec grapes are processed. We insist on distilling every grape by hand, which means that during harvest season, the grapes do tend to pile up. Luckily, we have plenty of storage space. Our equipment is state-of-the-art, including an industrial-sized freezer unit, and last but not least, our trusty grape crusher. Interesting. Wouldn't you say, Mr. Black? Follow me, please. Are you a wine man, Black? Somehow you don't seem the type. Oh, I believe Mr. Black here is something of a jack of all trades. Isn't that so? I dabble. I see. तो अपने टारगेट को किसी तरीके से ऐसी जगह पे ले जाएंगे बाकी वहीं इसको एलिमिनेट करते हैं। Have any of you been to our vineyard before? Only on business.
Next on our tour is the fermentation atrium, where the wine goes through its primary stage of fermentation. In these big open tanks, yeast converts the sugars in the wine to alcohol in a process that lasts between 5 and 15 days. This is also where we squeeze the mass into a fine juice using our grape presser for the longer secondary stage of fermentation. Fascinating. Now, before we move on, do any of you have questions? How about you? I have a question. मुझे क्वेश्चन है. Perhaps we can take a closer look. Certainly. Lead the way. ओके, अब इनको ले चलते हैं कहीं ऊपर वाले कंटेनर के पास. आई थिंक वहाँ पर कोई भी नहीं है. आ रहे हो? अच्छा, सब आ रहे हैं. ओके, चलो भाई सब लोग. ये लोग तो भाई बहुत स्लो चलते हैं, एकदम पैर में मेहंदी लगाकर. ये तब भी दौड़ कर आ गया. चलो भाई, यहाँ क्लोज जाना पड़ेगा तभी आगे का सेटिंग चालू. किन ग्रेप्स भरे हुए हैं, पके हुए सारे. Interesting. Are those cooling sockets? डायना के ऊपर भी पुश करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर इसको हमने धक्का दिया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा. ये ऐसे ही रुकी रहे तो बस इसको यहीं से सीधे कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं. देखते हैं. वेट फॉर इट. Well, looks like an accident waiting to happen. Occupational hazard. Hey, Burnwood? ओके, आप लोग चलिए, मैं इसका जूस निकाल कर आता हूँ. ओके, फाइबर वायर और डन. इसको जल्दी से अंदर डाल देते हैं. ओके, तो पहला टारगेट हमारा एलिमिनेट हो चुका है. अब बढ़ते हैं दूसरे टारगेट की ओर. What happened to your colleague? Urgent call. Something about work. I don't think she'll be coming back. Oh well. I'm sure she can find her way out. Let's proceed. So, are you associates of Mr. Yates? You might say we run in the same circles. Law and order. Must be very exciting. It's about 99% preparation. And so we arrive to our final stop, the barrel room. This is where we store the wine during the secondary stage of fermentation. The area behind the glass is where we keep our most precious bottles, including a 1945 Grand Paladin. इस बॉल के पीछे हमारा सेकेंड टारगेट है. वो आएगा कि जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. Can only be unlocked from the security room high above our heads. Remarkable. Here comes Senor. ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड टारगेट. Shall leave you in his capable hands. How reassuring. Miss Burnwood, is it not? Don Yates. Pleased to meet you. You come very highly recommended. As Chief of the Heralds, let me be the first to say, welcome aboard. Why, thank you, Mr. Yates. Rest assured that I will be following your every lead. Very closely. Say, that reminds me. We're about to have a little Herald get-together up at the house. Just a modest toast to celebrate my forthcoming inauguration as Constant. You are, of course, most welcome to join us. I believe you shall make a fine Herald, once the training wheels are off. I wouldn't miss it for the world. Capital. Right this way. Into the lion's den. Why don't you take a break, Corvo? We're done here for now, I think. Oh, but don't go too far. I may still need your services later. I'll be closer than you think. Oh, almost forgot.
Cortazar, please nip down to the wine cellar and tell Mr. Flowers, the sommelier, to prep the 1945 Grand Paladin and bring it up to the house for our special. तो हमें दूसरा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसकी बेस तक जाने का। अब कोई 1945 की कोई यहाँ पर वाइन रखी है, उसी को लेकर चलते हैं। तो पहले सेफ का हमें क्लॉथ चाहिए होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा शायद। क्या है? ओके, अब इन लोगों को बात कर लेने थे थोड़ी देर। Mr. Yates wants the 1945 Grand Paladin brought up to the house. Special occasion. What? Did aliens land on the front lawn? Oh, hey. Are you the guy from the website? Oh, no. Okay. अच्छा, बातचीत में डिस्टर्ब हो गया था। चलो कोई नहीं। Aliens land on the front lawn? Have the ghosts of Jesus, John Lennon and Eva Peron unexpectedly come for dinner? Help me out here. What could possibly be so special? Above your clearance, Flowers. Just fetch it already. Fine. What's the passcode again? Last year of World War II. You have to look it up. कोई रास्ता होगा दूसरा। ये रहा अंडरग्राउंड। कैमरा ही लेते हैं। और इसको आई थिंक अभी ये स्कैन नहीं हो सकता, सॉरी अनलॉक नहीं हो सकता, तो कोई ढूंढना पड़ेगा हमें। कोई डोंगल वगैरह तो नहीं है आसपास। एक तो रास्ता बड़ा खतरनाक सा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ से तो नहीं है आई थिंक। ये बात चढ़ के देखते हैं क्या? नहीं, ये तो वहीं आ गए वापस से। एक ही राउंड घूमे। मुझे आगे कहीं से ढूंढना पड़ेगा। वापस से नीचे चलते हैं। एक सेकेंड। तो ये सारे लॉक हैं। डोंगल का एरिया किधर है? ये भी आई थिंक ये भी लॉक है। तो ये रास्ता किधर को जाता है? ये तो वापस वहीं आ गए। ना 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 ना, नीचे चलते हैं। आई थिंक यहाँ से रास्ता होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर ना हो। ओके, देखते हैं। अरे यार ये क्या? चढ़ भाई। अरे हाथ फिसल रहा है क्या? ओके, इसको जल्दी से फाइबर वायर लेकर इसको ये ओके, इसको जल्दी से डंप करते हैं वरना ये कहीं देख ना ले। ओके, हम भी नीचे चलते हैं और इसके कपड़े लेते हैं फटाक से। ओके, अरे ये क्या हो रहा है आज? इसका जाने का वेट कर। नहीं, ये कहा रैट पॉइजन। ओके, तो ये रही कि ये रहा डोंगल और चलते हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो हमें मिल चुके हैं। यार ये कहाँ आ गए? वापिस से अपने कपड़े पहन लेते हैं और चलते हैं। उन डोर को अनलॉक करते हैं जो डोर लॉक थे। कैमरा, ये रहा कैमरा और यह खुल गया। यहाँ से चलना है। किसी एक को या दोनों को ही हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो चाहिए इनके कप क्लॉथ्स। ओके, इसको क्या हो गया? अच्छा,
जब तक ये यहाँ पे है तब तक हम दूसरे वाले डोर से चलते हैं, अपने लिए बेटर है। कैमरा इसकी ज़रूरत हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, किसी काम के नहीं है। ओके Perfection, irreplaceable. You don't drink the 1945 Grand Paladin any more than you would write a shopping list on the Mona Lisa. Men like Don Yates know the price of everything, but ओके सो घसीट लेते हैं, आजा भाई। और इसके कपड़े ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो दिख जाए उसको। ओके इसको भी रास्ते से हटा देते हैं। चल भाई। ओके। और ये डोर को कल जो ग्लासेस हैं यहाँ के, इसको ब्लैक कर देते हैं। इसको फाइबर से या चलो किसी से भी। सो सॉरी, तुम्हें जाना पड़ेगा। ओके अब इसको डंप करते हैं जल्दी से। ठीक, और कोई भी इलीगल चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोड डालते हैं जल्दी से। आई थिंक ओके ये जो वाइन का नाम है 1945 वही है। ओके अब हमें जाना पड़ेगा। ये डोर नहीं है, ये है। ओके यहाँ रहे हैं ये। Hey Flowers, over here. Come on, while we're young. ओके Sir, I present to you the 1945 Grand Paladin. Huh. Somehow I thought it'd be bigger. Come on, Flowers. Guests are waiting. यहाँ का डेकोरेशन तो देखो, कोई भी चीज सारी जरूरत की है, कोई भी चीज फेंकने की जरूरत नहीं है। Go on, get yourself patted down. तो हमें यहाँ पर चेकिंग करानी पड़ेगी, अपनी तलाशी लेनी पड़ेगी। If you want to come through, I'm gonna need to pat you down. Hey, stop twitching. You're not making my life easy here. Okay, everything seems to be in order here. Hey, you'll get to stepping, Holmes. ये कहीं पहाड़ वगैरह के अंदर लग रहा है। So here's the deal, Flowers. The boss is having a powwow with some employees, and discretion is the name of the game. I'm sure you figured that out already, being a scholar and all. Don't discuss. ओके तो यहाँ पे डायना भी है और हमारा सेकंड टारगेट भी है। ये लो भाई जो तुमने मंगाया। Mr. Flowers, our resident. Very soul of discretion. Ladies and gentlemen, Mr. Flowers, our resident sommelier. I believe he has brought us something quite special. Perhaps you will educate us, Mr. Flowers. This is the 1945 Grand Paladin, one of only 5 bottles in existence. Oh. The vintage is legendary, the proverbial unicorn wine. The year was hot, the wine's super concentrated, and thanks to hail and frost, ये बेचारा खुद ही सर्व करने में लगा हुआ है। Only 300 bottles were ever produced. When the vineyard was bombed during the closing days of World War II, only a single crate survived. It is said to have amazingly complex aromas with long layers of fruit and spice flavors and a silky texture. गिर नहीं रही इससे, तरीका देखिए अब इसका। Thank you, Mr. Flowers. Feel free to stick around in case our guests have questions. This wine was gifted to me by the Art Society
an acknowledgement of my firm's legal services. It stands as a powerful reminder that Providence draws its strength not from force, but from partnership. We are but a few, and yet together we are unstoppable, because we stand united. My friends, loyalty is everything, which is why we cannot allow traitors into our ranks. Ah, yes. Here it comes. This woman has waged bloody war on us. More than a dozen heralds and operatives dead. Your colleagues and clients, my friend, Ken Morgan. Not to mention the partners themselves, our founders, our benefactors. Make no mistake, this woman's hands are soaked in blood. Our blood. And Arthur Edwards, the new supreme head of Providence, is handing her the keys to the kingdom. Now, does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? He's got absolutely right. Perhaps Edwards simply recognizes talent when he sees it. Perhaps this is why I am also in the running to become constant. And following this childish outburst, I dare say I am in the lead. Dawn. What did she say? You're lying, of course. Which only proves my point. You cannot be trusted, Miss Burnwood. This woman will be our downfall. That is, unless we take matters into our own hands. You are heralds, sworn to protect Providence against all threats, including inside ones. I have devised a plan. Together we can make it work, but you have to decide now, my friends. Are you with me? Yes. 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 I'm in. Yes. Escort Miss Burnwood to my office. I'll join you shortly. अरे गजब। तो यहाँ पे थोड़ा गेम पलट चुका है। I think ये प्लान हो सकता है इन लोगों का। I'm warning you, Yates. This will not go your way. तो हम एक सेफ की ड्रेस में वापस डायना के पास नहीं जा सकते हैं। कुछ देखना पड़ेगा। Diana Burnwood died today by the hand of her rogue Agent 47. Revenge for her changing sides. This. तो हमारे पास 9 मिनट है, लगभग 10 मिनट है डायना को बचाने के लिए। Yes. Yes, I agree. Yes. हमें वेट करना पड़ेगा, इनके पीने के बाद ये लोग जाएंगे। A toast then, in her honor. Savor the taste because you never will again. And let me remind you, we are in this together. One goes down, we all go down. Here's to loyalty. To loyalty. उठो भाई, पी लियो सबके सब। ओके, तो इन सभी के जाने का वेट करना पड़ेगा। और इस ड्रेस में तो हम नहीं जा सकते उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड से पूरा भरा हुआ है। भरा तो पूरा बेसमेंट ही है। कोई और तो नहीं बच गया है? हेलो हेलो। अरे ओके, आई थिंक अब पीछे से कोई भी नहीं आएगा और इस सिक्योरिटी वाले को जाने देना होगा थोड़ा सा। और एक काम करते हैं, ये जो पास में ही जो खड़ा है इसी को एलिमिनेट करते हैं और इसी के क्लॉथ ले लेते हैं। ओके, इसको जल्दी से हटाते हैं रास्ते से। फाइबर वायर, ओके, दैट्स इट। अब जल्दी से इसके कपड़े लेते हैं और इसको टर्म कर। अरे रे 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 रे, सामने से कोई गार्ड आ रहा, बस देखे नहीं। ओके, भागो। यस, एक नहीं 2-3 आ रहे थे। सुखरेख ने भी देखा नहीं फिर प्रॉब्लम हो जाती।
ओके चलो चलते हैं डायना के पास। इन भाई साहब को फोन पे ही बात करने दो। Private. यस सर। ओके यहाँ पे कोई गार्ड होगा, तो एक नीचे गार्ड है और दो उधर और एक ये गार्ड और दो यहाँ पर। तो इसको पहले डायरेक्ट हटाते हैं यहाँ से। ओके हाँ ओ भाई ये वहाँ से फिनिश हो चुके हैं। Quick, clear the floor and get yourself a guard outfit. Yates won't be long. सभी गार्ड को हटाते हैं जल्दी जल्दी। ओके फिनिश। और इसको उठाते हैं और जल्दी से डंप कर देते हैं। और ये रहा एक गार्ड, इसको भी पास में इधर ही डंप कर देते हैं। ओके रही बात इस गार्ड की, और इसको भी ओके डन। इसको इसकी गन की जरूरत तो है नहीं फिलहाल, ले चलते हैं बाद में प्रॉब्लम नहीं करे। डायना कुछ तुम भी मार लो, सब हम ही मारेंगे क्या? ओके शायद सारा का सारा फ्लोर फिनिश हो चुका। हाँ एक ही दो लोग हैं, ज़्यादा है भी नहीं। ओके अब डायना से बात करनी शायद। Good. I was beginning to worry. Were you? No. Listen up, 47. Yates will be here shortly. He'll have his thug courtesan do his dirty work, but he won't pass up on the chance for a good gloat and a monologue. So, private space? Kill room decor? Exactly. We won't get another shot at this. Now sit down and blend in. When I provide a distraction, you just be ready to move. Okay. तो टारगेट हमारा आ रहा है, उसके साथ दो गार्ड भी आ रहे हैं। Corvo, pick up your damn phone. Plan B is a go. I repeat, Plan B is a go. Start prepping the crime scene like we discussed. Remote, staged accident. Okay. will bring the package. Get it done. Miss Burnwood. You rolled out the red carpet just for me. Don, you shouldn't have. So confident, even in defeat. I suppose you're not used to danger, always safe behind your screens. Just tell me one thing before we part ways. Why me? Why you? Why would Edwards trust you? Please. It will keep me awake at nights, and I'm 65. I get up 4 times to piss as it is. Oh, it's simple, really. Edwards is proud. He considers himself the cleverest man alive, and yet we tricked him on Isle of Scale, and it's eating him up. He needs to win. Full, unequivocal victory. My recruitment was just the feather in his cap. By the way, you were right about one thing. Yeah, I'm all ears. तो बाजी पलट चुकी है, और ये लो भाई तुम। अरे व्हाट इज दिस? If it's any consolation, Dawn, your instincts were dead on. I will be constant now. And I will make it my mission to tear down Providence brick by brick. Finish it. Such a good boy.
Well done, Okay. 47. Better get rid of the body. Won't be long before they come looking. तो पहले हमको ये सारी बॉडियाँ हाइड करनी पड़ेंगी। Oh. And dress appropriately. ओके, तो ये जगह फुल हो चुकी है। इसको किधर, ये भी जगह फुल है। कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। कोई कार की चाबी रखी हुई है, पता नहीं क्यों, जब मिशन तो फिनिश हो चुका है। ओके, इसको लेते हैं पहले। ये रहा ऑप्शन, इसको यहाँ पर डंप कर सकते हैं, करते हैं हम। ओके, अभी एक और बची हुई है, इसको भी कहीं ना कहीं हमें हटाना ही पड़ेगा। यार रहने दे क्या बीच में, या यहाँ से हटा देते हैं। ओके चलो भाई। ओके, तो सारी चीज़ें हाइड हो चुकी हैं। ड्रेसअप करते हैं, अब चलते हैं एग्जिट की ओर। यहाँ से तो कूद भी नहीं रहा, पता नहीं, आई थिंक कूदना तो चाहिए था। यहाँ से भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक गार्ड है, तो वापस कोई इलीगल चीज़ ये है, इसको हटाना पड़ेगा। कहीं घास पे चल के छुपाते हैं, क्योंकि यहाँ की तो दिख ही जाएगी। रास्ता है भी कि नहीं यहाँ से? यार कितने ढेर सारे गार्ड हैं। ओहो, वापस इसके अंदर से चलते हैं, क्योंकि यहाँ साइड से जाने कोई मतलब ही नहीं है। काफ़ी ढेर सारे गार्ड हैं। ये जगह जानी पहचानी है। हाँ, यहीं से तो ऊपर गए थे भी हम। ओके, रास्ता ये क्या है? तोप रखी हुई है। पहले हम यहाँ से अपने वो हटाते हैं, इसको हटाओ, और ये पॉइजन। ओके, बाकी सामान रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको नहीं कर सकते क्योंकि 3-4 लोग हैं यहाँ पे। इसको स्टार्ट कर देते हैं। ओ हो, गार्ड 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 गार्ड। ओके, इस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चल भाई, तू उधर जा, मैं इधर से भाग लूंगा। ओ नहीं 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 नहीं। ओके, भाग चलो भाई। अरे नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। चल कॉइन फेंक के तुरंत भाग लेंगे, सबका दिमाग उधर ही चला जाएगा। चल भाग 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 भाग। वेरी गुड भाई, जरी से दूर के लिए इतना
ओके तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे तो हम आराम से टहल सकते हैं। तो लगभग हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। 47. It's done. Now what? Now, we strike at the heart. Edwards. You know how to find him, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable, and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the olive grove at sunset. One last tango, 47. तो अब आता है इस स्टोरी का पूरा ट्विस्ट। How did you know? Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? I think you know. I am sorry. This is a necessary evil. What have you done? Ether brand neurotoxin transfers by touch. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. My family. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent.